Today is a special day, and no, it's not my birthday. Neither am I getting married. अभी तक मेरी वाली ने हाँ नहीं बोला है. But हाँ, today is a special day because Diogo Jota has scored a last-minute winner, and honestly, it seemed that this was a match Liverpool were gonna win by 5 or 6 goals, but then Liverpool conceded 3 goals, and the match was 3-3, and it felt कि ये वही वाला मैच है जो होते रहे सीजन की जीत रहे हैं जीतते जीतते हार गए बट मेंटालिटी मॉन्स्टर्स तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा बिकॉज मुर्रा का बैक पास था बट व्हाट अ मैच आई एम जॉइंड बाय रोशन भाई एज ऑलवेज फ्रॉम एलएफसी अहमदाबाद रोशन भाई वेलकम टू द शो एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट दर्शन भाई here who also came on as a guest on our podcast and is very active in promoting our podcast that from that Liverpool guy Darshan bhai and Roshan bhai welcome to the Indie Football Podcast show with LFC Ahmedabad जो हम usually करते हैं post match review कैसा लग रहा है दर्शन भाई पहले आपके पास आऊंगा आज क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो सारे रिव्यू शो में कैसा लग रहा है आज के मैच के बाद यार बिल्कुल बढ़िया। देखो आप स्माइल से ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना खुश हूँ। Yeah. स्पेशली आफ्टर जो रिचार्लिसन ने थर्ड गोल किया, बहुत ही खराब लगा यार। आया वी तो वर 3-0 अप और उसके बाद जिस तरह से सेकंड हाफ परफॉर्मेंस लिवरपूल का रहा, राइट दैट वाज बिट डिसअपॉइंटिंग बट एज यू सेड द फिनिश ऑफ जोटा, द वे ही कंट्रोल्ड द बॉल और बहुत ही अच्छी फिनिश और बहुत मजा आ गया। देखो क्लॉप ने सेलिब्रेशन में अपनी हैमस्ट्रिंग खींच ली, सो इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं। Yeah, I mean, absolutely. रोशन भाई कैनॉट स्टॉप बीमिंग और इतना अच्छा लग रहा है मुझे देखकर बिकॉज मैं खुद ऐसी उसी फील्ड में हूँ रोशन भाई पिजन ने जब स्कोर किया एंड यू नो पिजन फेस जिसकी बात कर रहा हूँ रिचार्लिसन ने तो हाउ बैड डिड इट फील एंड व्हाट डिड यू थिंक कि लिवरपूल गोल मारेगी या फिर लगा कि अब तो गया मैच हाथ से पता नहीं, उसके मारने के बाद मुझे लगा था कि खुन्नस में एक तो आएगा फॉर श्योर because चलो because अच्छा world and world justice works in very weird ways and I मुझे था कि अगर रिचार्लिसन मारेगा तो फिर हमारा भी एक गोल आएगा just because it's Anfield but I think first 15 minutes के बाद I was kind of wanting to give up. मैं सोच रहा था यार चलो क्रूज करके जीत जाएंगे। आज सुबह वैसे भी मैं 3 बजे उठा F2 देखने के लिए, फिर 6 बजे उठा F1 देखने के लिए और फिर बाद में देखा कि लिवरपूल का गेम है तो I have slept only 2 to 3 hours between each of these sporting events. तो फिर ऐसा था कि जब पहले 15 मिनट में 3 गोल लग गया I was like चलो राइट chill है, I'll sleep now. It's going to be the फेयर same न्यूकासल स्टाइल ऑफ गेम। अभी 3 लग गए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? लाइक यू नो F1 में तो यू हैव टू वेट अंटिल द लास्ट मोमेंट टू सी हु फिनिशेस वेयर। इसमें तो 3 गोल्स यार अब लाइक एंड द वे दैट वी वर प्लेइंग एक्चुअली जो आई नो प्रेसिंग था, जो क्लोजिंग डाउन था, एवरीथिंग प्लेइंग थ्रू दोज nice channels and everything was really going well so I was gonna give up but then जब पहला गोल लगा I'm like नहीं अभी शायद this game has something in it and then we did a classic Liverpool by not putting more pressure and getting the other goals immediately as soon as I mean we had a lot of pressure. We should have scored at least 2 more goals. Technically we got saved by the goal post द thrice. पोस्ट हाँ Yeah. हाँ, गोल पोस्ट। तो 6 गोल खा सकते थे हम लोग वो ठीक है कोई बात I know. गोल पोस्ट और Dash, एलिसन दोनों ने हमको गेम में बचा के रखा, वरना absolutely. दर्शन भाई आपके पास आऊंगा मैं शुरू में जो 15 मिनट लिवरपूल की परफॉर्मेंस थी लिवरपूल और 3-0 अप कैसा लगा एंड डिड यू थिंक कि लिवरपूल वाज गोना क्रूज वो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे यस एक्चुअली बहुत ही अच्छी 15 मिनट। आप देखो ट्रेंड जिस तरह से इन्वर्टेड फुलबैक में इस रोल में अडेप्ट कर रहा है और गैप को बहुत पॉजिटिव लगा मुझे पहले 30-35 मिनट। और जिस तरह से वो इन्वॉल्व हो रहा था हर एक पास हर एक मूव में गैप को वॉज इन्वॉल्व। उसके साथ राइट डियाज ने भी अच्छा रन किया। अनसरप्राइजिंगली कर्टिस जोन्स का अच्छा फॉर्म अभी भी चल रहा है, सो वो एक अच्छा फैक्टर था। मगर राइट एक चीज तो हमने नोटिस की है जब से ये थोड़ा आप कह सकते हो टैक्टिकल ट्विक किया है क्लॉप ने, कि जो हमारी लेफ्ट साइड है और स्पेशली रॉबर्टसन उसको अडेप्ट करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि फेयर आपने देखा होगा शायद सेकंड गोल जो उनका था सोन वाला, वहां पे उसने ऑन साइड रखा था। बाकी के सभी डिफेंडर आगे बढ़ गए थे और रॉबर्टसन अभी भी
वो अपने पिछले वाले फॉर्मेशन की तरह ही खेल रहा है। टाइम लगेगा, मुझे लगता है वही एक गड़बड़ हुई हमारी लेफ्ट साइड पे, वरना तो बहुत अच्छे था हमारा पूरा पहला हाफ। सेकंड हाफ में स्पर्स ज़्यादा डोमिनेट थी। वो क्लियरली दिख रहा था कि यार गोल कंसीड करने के बाद उतना ज़्यादा पोजीशन हमारे पास नहीं था, एंड वी डेफिनेटली नीडेड मोर लेग्स इन मिडफील्ड। और जो क्लॉप ने सब्स्टिट्यूट किया, एलियट की जगह पे हैंडरसन आया, वो थोड़ा काम किया उसके बाद। सो हाँ, राइट। वही लगा। रोशन भाई, आपके आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं, डिड यू थिंक कि वो जो जोटा वाला जो फाउल था, डिड यू थिंक दैट वाज अ रेड कार्ड? I mean, they have been given red card. अभी तुम अगर माने वर्सेस एडरसन वाला भी देख लोगे हाँ, few years ago. राइट 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 So I mean, I thought it could have been it दे सकते थे just because there was some blood coming out हम्म, and retrospect में they could have given it. But then if you look at it, ऐसा नहीं था कि the foot was coming to the face. Like राइट राइट Oliver Skip went with his head down, so a lot of times that also matters कि अगर तुम अपने natural height से नीचे जाके if you're trying to head the ball, then the foot will always come into the picture. And so राइट if राइट it was just Jota's foot all throughout and like ऐसे Oliver Skip was moving हाँ away from the tackle or something, but he was also going for the ball. Instead of using his feet, he used his head. So in that case, yellow card was a good decision. I think he deserved a yellow card because high boot generally is not fair play. You can say ऑब्वियसली that. So yeah. राइट So I mean, technically, Jota could have moved his foot away. दिखा नहीं, like he was committed to the challenge. So that's why he got a yellow card. Let's say अगर वो पैर हटा रहा होता और फिर भी लग गया होता, तो then they would have said कि okay, they were in one moment they were going for it and in the other moment they backed out of it, and but still unfortunately touch हो गया, तब शायद किसी को भी कार्ड नहीं मिलता, or like Jota wouldn't have gotten that yellow card. But फिर ठीक है, yeah, I don't think that was a red card at all, like in footballing sense. I agree, I agree. I mean, मुझे भी लगा कि because it's not that it the intention was to hit the player or Right, intention was to hurt exactly. the player. तो मुझे ही वही लगा। टू बी दर्शन ऑनेस्ट, भाई, रेड कार्ड होना चाहिए था हाँ तो वो लुइस डियाज वाला होना चाहिए था, जो ऑलिवर हाँ, स्केप ने बिल्कुल पैर हाँ, रखा था। बिल्कुल। इंटेंशनल नॉट इंटेंशनल, दैट्स अ डेडली फोर्स और व्हाटएवर दे I, कॉल दैट। एंड इट वाज एक्चुअली इन द बॉक्स, बॉक्स में भी था, सो वहां पे तो हाँ, आप दे ही सकते हो रेड। उनको येलो भी पेनल्टी नहीं मिल दिया। सकती थी, पेनल्टी हाँ, मिल सकती थी, आई थिंक। हाँ, येलो भी नहीं आई दिया, एग्री। वो हाँ एक मतलब क्वेश्चनेबल। वीआर ने चेक किया और वो जाने दिया, बेसिकली दैट वाज बट द आई होल। थिंक ही गॉट द बॉल फर्स्ट ना, मतलब जितना मुझे लग हाँ रहा आई है। हाँ, डोंट, ही ही गॉट डिड द गेट बॉल द, फर्स्ट। ठीक, ही गॉट द बट बॉल स्टिल आई फर्स्ट। मीन हमने काफी बार ऐसे देखा है कि फॉलो थ्रू वाले फाउल्स हैव बीन गिवन, सो हाँ, आई नो, हाँ वो मैं मानता हूँ आपकी बात। दर्शन भाई, एक चीज मैंने नोटिस की, जब मैच की लाइनअप आई, ठीक है, तो उसे मैंने देखा कि जोन्स खेल रहा है, एलियट खेल रहा है। अब नाउ जोन्स प्लेड वेल, दैट्स व्हाट आई फील, एंड एलियट फॉर मी, लाइक लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर दे, ही हैज बीन गुड फॉर, लाइक फॉर मी एटलीस्ट दिस सीजन, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली खेला तो है, ही हैज एटलीस्ट बीन देयर इंजरी फ्री रिलेटिवली। तो आपको क्या लगा, डिड यू फील द मिडफील्ड was a bit lightweight defensively, or did you think Klopp's selection was right? नो, आई थिंक क्लॉप सिलेक्शन वाज राइट, बिकॉज हैंडो को कंसेक्यूटिवली 3 स्टार्ट देना मेरे हिसाब से अभी अभी नहीं वो ऑप्शन रहा कि वी कैन स्टार्ट हैंडो 3 मैचेस इन रो। मुझे नहीं Hmm. लगता, उसको रेस्ट देना ही पड़ेगा, आपको बेंच पे बिठाना ही पड़ेगा। एंड Right. थियागो वाज अनअवेलेबल, वो उसकी इंजरी है, क्या है वो नहीं। सो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, और वो था हार्वी एल्बिट। एलियट को अगर ना स्टार्ट करे तो आपको मिलनर को स्टार्ट कराना पड़ेगा। सो आई वुड ऑलवेज प्रीफर एलियट स्टार्ट करे, क्योंकि यंग है बंदा, क्रिएटिव में ज़्यादा इनपुट देता है। आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ में एक बहुत ही अच्छा पास उसने किया था गैप्को के पास, गैप्को कंट्रोल नहीं कर पाया था, वो भी गोल हो सकता था अपना। सो एलियट इन जनरल पहले हाफ में अच्छा था, और मेरे हिसाब से सही डिसीजन था, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास उसका। I agree. I agree. Like, but what I felt was that this has been the trend this season कि लिवरपूल अगर जीत रही होती है एंड वन गोल दे कंसीड है, ऑपोजिशन ने एक गोल मार दिया, लाइक वो वेस्ट हैम वाला गेम में अगर छोड़ दूं, तो बहुत ही एकदम मोमेंटम बदल जाता है गेम का, और वो जो गेम मैनेजमेंट है, दैट इज समथिंग दैट वी आर लैकिंग। आई थिंक रोशन भाई, व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपको लगता है ऐसा है, या फिर लाइक डू यू थिंक इट वाज अ वन ऑफ मैच? नहीं, I mean it makes sense, right? Like when you are
हाई इन कॉन्फिडेंस, एंड जब दूसरा टीम अटैक ही नहीं कर रहा है, देन सो इफ यू कंसिडर लास्ट 3-4 गेम्स लिवरपूल हैज प्लेड, द अदर टीम हैजंट अटैक्ड मच, राइट? तो हम जो खेल रहे थे, दैट वाज द बेस्ट फुटबॉल, एंड हम्म व्हाटएवर द आउटकम वाज, इट वो सबसे बेस्ट था। अब जब हम्म दूसरा टीम अटैक करने आता है, दैट्स व्हाई वी वर स्केप्टिकल कि इफ दिस इन्वर्टेड full back will work for a bigger team. And Tottenham, although its form recently is still a big team, वो हमसे तो ऊपर है ही। तो इन दोज केसेस आई थिंक मुझे थोड़ा स्केप्टिसिज्म तो था, बट आई गेस लाइक इट वर्कड आउट वेल, आई वुड से। right. Talking about एक और working चीज out ये well. था कि आई हाँ वुड से हार्वी एलियट नीड्स टू बी मोर प्रोटेक्टिव ऑफ ट्रेंट, बिकॉज हाँ वो right. राइट साइड से काफी सारे रन्स बने, लाइक लास्ट 2 गेम्स यू कुड हैव सेड कि यार टीम्स डिड नॉट ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट, बट हम्म that's why I think जब team sheet आई थी and I was like Henderson is not playing because this is new for everybody, right? So Henderson seems to be a better option to provide that cover for Trent on the right hand side when he's in the midfield, and वो area जब खाली होता है, to be more defensive. So I right. think Harvey Elliott needs to be more defensive. He's already a very good attacking player, so he will do well. And good to see Curtis Jones back the way he And came scoring from also. the scoring, and also he used to play like this when he came from academy. Injury हाँ ke baad he lost a lot of touch, and then obviously it didn't help that Liverpool was playing bad also. So दोनों चीजें combine हो गए and he got a lot of flack, but I think, to be honest, to his credit, he did everything by himself. Like the upturn in his form is just because he kept at it, and he just showed that he can make that difference. And I think इसके वजह से भी हमारा midfield थोड़ा different लग रहा है. Even though we went with 2 youngsters, it didn't feel like we were light in midfield in general. And Right. also with Trent moving in the midfield, then it's more stronger. Right. और Darshan रोशन bhai. भाई जैसे आपने कहा कि कर्टिस का जो फॉर्म है और उसका एक और रीजन है ना कि आपको जो फ्रीडम मिलती है कर्टिस यूजुअली नीड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम वो Hmm. लेफ्ट Right. साइड पे उसको उतना पीछे आने की जरूरत नहीं क्योंकि फाबिन्यो है वहां पे Hmm. सो वो I agree. क्रिएटिव उसके पास लाइसेंस है कि आप जाओ भाई आप कंट्रीब्यूट करो अटैक में डीएस के साथ या फिर गैपको के साथ लिंकअप करो सो वो देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है और देखो अगर नेक्स्ट सीजन में इसी फॉर्मेशन के साथ हम जाए और एक्चुअली दो अच्छे मिडफील्डर हमारे साथ आए तो ये बहुत अच्छी सेटअप लग रही है अभी तक I know. Darshan bhai, talking about setup, अगले मैच में और जो बचे मैचेस I know there's a very slim chance of a top four finish, but like according to you, left wing पे Jota को खिलाना चाहिए या Diaz को start करना चाहिए because Jota was not exactly fit for this match. Klopp ने ही बोला था because you know he had this knock against in the last match. So would you start Diaz or would you start Jota in the next match? नेक्स्ट में तो डीएस को ही कराऊंगा देखो जोटा ने गोल मारा लास्ट में विनर करा वो अच्छा है मगर जो फर्स्ट हाफ में लिंकअप था बिटवीन गैपको एंड डियाज वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत True. अच्छे पासिस उन्होंने निकाले आई थिंक हम भी ज्यादा स्कोर कर सकते थे इस मैच में और स्पर्स हाँ. भी ज्यादा स्कोर कर सकते सो Right. इसलिए मुझे तो लगता है कि डीएस के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह से हम जोटा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 60 मिनट्स पे 70 मिनट्स पे सो इट वुड बी नाइस कॉम्बिनेशन ऑन लेफ्ट साइड Right. I think What? it could also depend on how the team set up. अगर attacking team है, then Jota has all the space to move into. But if the team generally sits back and waits for a counter attack, then Diaz is much better because उसका ball retention अच्छा है. He can dribble and he can shoot from outside the box. So starting 11 might depend on किसके साथ खेल रहे हैं. But as I said, like both of them are interchangeable. मतलब one starts and other substitutes. I think we are pretty sorted on the left wing part of stuff. Right. Thiago's was absent today. Like Roshan bhai, Thiago has been absent a lot this season, and Darshan bhai ने जो अभी ग्रिम दी तो समझ में आ रहा है कि if no one is really happy about it, and we are very disappointed. So क्या लगता है आपको Thiago के साथ? How do you see it going forward, and how much of a concern is it for Liverpool? So I feel like
At a point of time जब हमारे पास players नहीं थे तब Thiago was the player and the team was kind of playing around him. But I don't think Klopp sees it that way right now. He's more of a bench player who has the capability of changing the game whenever he can. So I think he comes under the category of Milner, who is just a very able bench player. And Hmm. then जब भी हमें ऐसा कोई मैच चाहिए जहाँ पे you need more passes, I think I would still have him in the squad because I know when he's fit what he can do. The fitness ट्रू। obviously yes is a issue, वो बात तो है, but हमारे पास currently if you look at it, uh, I would not let him go just because he's not fit. I would still keep him around, get more midfielders. I mean, obviously, get two midfielders for sure. But then have Thiago in cases or in games where you need that penetration, maybe. And when he's fit, he can provide you with that pass. And yeah, I think he's Trent is basically doing what Thiago is supposed to do. Hmm. So हाँ। it is up to Trent now. Like if he plays bad, then he will be pushed back to left back completely, and then have Right, right, Thiago yeah. in the midfield. So it again will depend. But yeah, I would still keep Thiago. Fit, not fit. He's a player to have around. And more than that, I think he's important for other players also, like other players like Darwin who don't know English and they're only Spanish speaking players. वहाँ पे हाँ, बहुत important हो जाता है to have a player of his ability to like have them transition into the squad. So I think he's vital to us. Yes, in current scenario he's not ideal, but ठीक है, we'll wait for that. fair enough. तो दर्शन भाई, बिफोर वी रैप दिस अप, आपके पास आऊंगा कि फुलहम वाले मैच में क्या लगता है, क्या स्कोर होगा? एंड डू यू थिंक देयर इज अ चांस ऑफ अ टॉप फोर फिनिश नाउ, आज के मैचेस के बाद? अनुकुश, टॉप फोर का चांस तो बहुत ही स्लिम है। अगेन वी डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट ऑफ न्यूकासल एंड न्यूकासल। यूनाइटेड। हाँ, वो पॉइंट नहीं ड्रॉप करेंगे तो हम कुछ भी कर ले, कोई फायदा नहीं। बट वी कैन स्टिल होप। 5 पे आ गए हैं, 4th पे हो जाए। और फुलम की गेम ट्रिकी होगी मेरे हिसाब से, जिस तरह से फुलम खेल रही है अभी। अगेन इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, मगर मैं तो देखना ही चाहूंगा कि हम जीते। जिस तरह से उनकी टीम है, थोड़ा Even सा today प्रॉब्लम से। Manchester City वाला game भी tricky था. Like they didn't हाँ, Manchester City just हाँ, scraped through 2-1. बिल्कुल, So बिल्कुल, I think इसीलिए it will be difficult challenge. तो फाइनल उसी तरह प्रेडिक्शंस से दर्शन भाई? रिजल्ट निकालना पड़ेगा रोशन भाई हमें। टू हाँ. वन बहुत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2-1 इट इज फॉर यू आई गेस। रोशन भाई, आपको क्या लगता है, क्या स्कोर रहेगा लिवरपूल और फुलहम का? Yeah, 2-1 is fine. At this point, I just want to keep this momentum and win. It doesn't matter the राइट। scoreline. 2-1 is a good scoreline. I'm more than happy. If we बिल्कुल। can keep winning all the games, then at least we gave that top four a try. And राइट, then राइट। you can always once you are winning, then we can think अच्छा ठीक है United हार जाए. आज there was an expectation that if Aston Villa could pull off something, even a draw would have been nice for us, but it didn't happen. और जिस तरह से फॉर्म में थी रोशन भाई एस्टन विला, 6 कंसेक्यूटिव विंस, और Exactly, उसके yeah, बाद yeah. आप, इसलिए एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, मगर हुआ नहीं कुछ। ठीक है, I'm more वही। than happy with fifth position considering where we were starting of the season. We were ninth, 10th, and we हाँ, could have been in the bottom half. And considering चेल्सी की चेल्सी की तरह वजह हो से, हाँ, जाएगा Chelsea, look at या Chelsea where they are right now. I'm more राइट, than राइट। happy with fifth. It's okay. हम लोग यूरोपा लीग जीत भी जाएंगे तो there it's another European trophy. Ultimately, trophies matter. चाहे मिकी माउस हो, चाहे डोनाल्ड डक हो, we want to win trophies. That's the whole point of supporting a club and a club playing football, right? Absolutely. I am manifesting a 2-0 win. I hope we keep a clean sheet. बहुत टाइम से रखी है लिवरपूल ने, है ना? And okay, thank you guys. Thank you Darshan bhai for joining. Thanks, Thank you Roshan Anukush. bhai for joining. Thanks for Yeah, always taking all the time. And absolutely. another win to discuss. I hope this keeps on going and Liverpool keep Sure. winning. Thanks guys again for joining. See And you I guys. hope everyone watching has a great day. Thank you. Bye. बाय बाय। Bye bye.